So very good afternoon to all and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible. Just type yes on the chat box and screen is visible. So अगर मेरी voice audible है and screen visible है, just type yes on the chat box. So we'll wait for 30 seconds or so for the confirmation and then we'll begin the session. So thank you so much for the confirmation. Now today is Nifty 50 weekly option expiry, and today the Nifty is quite volatile also. And like talking about this yesterday session also, it was means a bit negative, but today like the Nifty 50 has opened the high, and currently it is like it made the high near about 23,377, and the high was 23,391, and the low was 23,272, and currently it is trading at 23,300. So it's quite volatile. I would say like it is in a range bound situation today, but let's see how the market fluctuate. But as per the data right now, if I look at, then सबसे ज़्यादा OI जो build up है, that is on the 23,300, followed by the this 23,400 and 23,500 on the call side. And on the put side again, it is on the 23,200 पे सबसे ज़्यादा OI build up हो रहा है. Now in front of you, ये research report है Nifty 50 का, जो every week we publish it, and that's a weekly option expiry Nifty 50 का. Now as per the data, that is Nifty 50 witnessed a decrease of 1.6% and increment of 7.1% in the OI data, indicating the short build-up. Okay. Now on the right hand side there is a Bank Nifty. So Bank Nifty का monthly expiry है, Nifty 50 का आज expiry है, as being the today Thursday. Now सबसे ज़्यादा support and resistance की बात करें, then on the call side it is noted at 23,300, followed by 23,500, and 400 is the resistance level. And on the put side, that is means we have observed that is on 23,000, then 23,200 and 23,100, that may act as immediate support levels. Now जो strategy है जो हमने next week का दे रखा है, that is called your bull call spread strategy. Okay, that's a strategy for week of 23rd January. Now we have recommended that is buy 23,300 call at the range of 133 to 145, and even sell at the same, that is on 23,500, 65 to 75 is the range. The break even is 23,670, and the risk value is minus 1,700, and the reward value is 3,300. So that's the strategy for this for this upcoming week. Now why we have suggested the bull call spread? So bull call spread में क्या होता है, basically like you buy the call also and simultaneously you sell the put also. So यहाँ call also. So you buy the call and sell the call also. So normally if you look out, then margin जो requirement रहेगा वो 30 to 40,000 में like means your work is done. But in case like you are doing the naked call sell, or I would say like the put sell, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है. बट ये जो स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड जो स्प्रेड स्ट्रैटेजी. इफ यू आर नॉट अवेयर कि ये स्प्रेड स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है या कैसे काम करता है, तो ऑलरेडी वी हैव डन द लाइव वेबिनार ऑन दिस स्प्रेड मींस दैट इज ऑन द स्प्रेड वेबिनार वी हैव डन इट. दैट्स ऑप्शन स्प्रेड वेबिनार की ऑप्शन में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेड रहते हैं एंड कैसे देखना चाहिए उसको. सो यू कैन गो इनटू द यूट्यूब सेक्शन अंडर द लाइव. देयर इज ऑल द सेशंस ऑन द ऑप्शंस which are already there, so you can go and watch at per your convenience. Now I'm having with me Mr. Karan Pai, who is a research analyst and who will going to walk you through about the today's expiry, followed by the support and resistance, कौन से sectors आज lead कर रहे हैं and कौन से stocks आज lead कर रहे हैं, उसका क्या support resistance है, and simultaneously like Bank Nifty का क्या view रह सकता है. So over to you all, Karan.
Yeah, thank you for that, Rohit. I'll just quickly share my screen. Yeah. So I hope मेरी screen visible है and I hope मैं audible भी हूँ. Okay. So thank you for the confirmation. So quickly running through what has happened on yesterday evening when we were sleeping. So US markets में अगर आप देखोगे एक जनरल रिस्क ऑन मूड आ गया था एंड डाउ सॉरी S&P 500 अगर आप देखोगे इट वाज अप अबाउट 1.8%. नैस्डैक अगर आप देखोगे तकरीबन 2.5% ऊपर था एंड देन दिस मॉर्निंग वी हैड एशियन मार्केट्स दैट वर अ बिट जिटरी. सो अगर आप निकाय देखोगे इट वाज though it is higher when compared to the previous session close, बट अगर अभी आप देखोगे थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर वहां पर भी दिख रहा है. देन हैंगसेंग थोड़ा ऊपर होने के बाद इट इज कवरिंग अ बिट. सेम थिंग विद कॉस्पी ऑल्सो. सो कॉस्पी पे भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ पॉजिटिव ओपनिंग. एक जो कैंडल फिलहाल जो बन रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है. सो गिफ्ट निफ्टी भी अगर आज सुबह अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तकरीबन 140 पॉइंट वो पॉजिटिव बता रहा था एंड दैट इज व्हाट वाज रेप्लिकेटेड इन टुडेस ओपनिंग. So if you look at today's opening, so कल का close if you see it was 23,213 and अगर आज का open आप देखोगे it is 23,377. वहां से immediately there was a 20 point up move. वहां पर एक high print हुआ था and अगर आप इंट्राडे चार्ट पर जाकर देखोगे ये initial minutes में ही हो गया था. And then we are seeing a selling pressure. Now what exactly is this level? ये यहाँ से इतना rejection क्यों मार रहा है? So one of the reasons is ये जो gap area है that probably is acting as a resistance and there is a confluence at this point. So multiple touch point levels है, gap area है. So कहीं ना कहीं somewhere in between 23,500 23,650 के आसपास resistance आते हुए हमें दिखाई दे सकता है. Now this was something that was mentioned in today morning's podcast and also रोहित ने जो भी report explain किया उसमें भी OI data पे अगर आप गौर करोगे तो this is what we are seeing. Now there is a particular pattern that I am seeing in the Nifty. So जब से ये फ्राइडे को ये जो लो प्रिंट हुआ था 23,047 का तकरीबन 23,000 का जो लो प्रिंट हुआ था वहां से वी बीन सीइंग अ गैप अप ओपन बट देयर इज नो फॉलो थ्रू. भले ही देर इज अ गैप अप ओपन जो क्लोज रहता है वो थोड़ा नेगेटिव कैंडल में ही होता है बिकॉज इफ यू सी कंपेयर टू द ओपन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे क्लोज जो है इट हैपेंस ऑन अ नेगेटिव. So that is something that we have observed. So this is basically an upward drift and आने वाले सेशंस में जो 23,500 का लेवल है वो आपके लिए बहुत क्रूशल होगा बिकॉज अगर ये एक काइंड ऑफ कंसिडर दिस एज अ मेक और ब्रेक लेवल. अगर ये लेवल के ऊपर वो जा रहा है देन ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अप मूव and वो भी जो रहेगा we might see it limited to probably 23,900 and 24,000. So ये broad resistance zone होगा index का. Now on the support side ये जो recent swing low है that is around 23,000. It is also a round figure. So वहाँ पर immediate supports आते हुए दिखाई देंगे. Now if you remember last हमारे webinar में हमने ये candle point out किया था कि 23,500 अगर break करता है हमारे जितने भी प्रोप्राइटरी टूल्स है दे आर टेलिंग दैट इट कुड गेट वे मोर बेरिश. एंड अगर आपने हमारे लिंक्डइन पोस्ट वगैरह भी फॉलो किए हैं तो देयर वाज अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट दैट वाज पुट अप. नाउ पॉइंट एंड फिगर आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट something that people usually follow but then it is one of the tools that we use to get a clear understanding of what the trend is without the noise. So these are some of the key things that we need to focus on in Nifty. So quick summary is 23,500 से लेके 23,650 का थोड़ा resistance zone बनते हुए दिखाई देगा. And अगर वहां से अगर ऊपर जा रहा है then we might see it move probably higher towards 24,000 24,200. 24,200 is a bit far-fetched at this point, but 24,000 I like to give a little bit of buffer. So that is why 24,200 and नीचे में 23,000 is going to act as a support. Now let us quickly take a look at what the OI data is telling at this point of time. Current expiry का तो रोहित ने explain कर दिया है. In the report that he actually showed. So we'll quickly take a look at what the OI data for the coming week actually looks like. So निफ्टी NSE के वेबसाइट पर निफ्टी टाइप करके क्लिक ऑन ऑप्शन चेन. चेंज की एक्सपायरी फ्रॉम 16 Jan to 23rd Jan and then I scroll down.
सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑफ कोर्स 23,300 दैट बीइंग दी एटीएम, वहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी, बट देन इफ आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन आई सी लेवल्स ऑफ ऑन द कॉल साइड, आई सी लेवल्स ऑफ 23,400 23,500। अगर क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे तकरीबन 70 नहीं 50 55 हज़ार का वहाँ पर ओ आई एक्यूमुलेशन है। एंड द नेक्स्ट वाई एक्यूमुलेशन इज डायरेक्टली एट 24,000। सो जो लेवल्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे 23,500, उसके ऊपर जाएगा तो 24,000, दैट प्रोबेबली द एंटायर ट्रेडर कम्युनिटी इज लुकिंग एट, दैट इज द लेवल दैट द एंटायर ट्रेडर कम्युनिटी इज प्रोबेबली लुकिंग एट। पुट्स की अगर हम लोग बात करें तो इफ यू लुक एट पुट्स, सो देयर इज अ मेजर ओ आई एक्यूमुलेशन अराउंड 23,300, बिकॉज अगर आप चार्ट पर भी देखोगे, सॉरी नॉट 23,300 का लेवल नहीं है, बट इट इज क्लोज टू ओटीएम, सो वहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी होनी जायज़ है। 23,000 पर देर इज अ बिट ऑफ एक्यूमुलेशन फॉलोड बाय 22,800, बट 23,000 पर इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द हाइएस्ट वाई एक्यूमुलेशन आफ्टर 23,300। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज फॉर द कमिंग वीक ऑल्सो, द ट्रेडर्स आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अ रेंज ऑफ समवेयर इन बिटवीन 23,500 and 23,000. So these are key levels to watch, and अगर ये levels breach होते हैं only then the index could catch some sort of direction. So whenever there are moves like these wherein the index is opening on a positive note and then वहाँ से sell off आ रहा है, मतलब it is kind of a hint that the bulls are not very confident. So that could be it. Plus we have the new administration in the US coming in, so उन लोग के policies को लेके थोड़ा jitter होगा। एंड ऑल इन ऑल जो भी डेवलपमेंट्स है जियो पॉलिटिकल में, सो अभी कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स को कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि व्हाट द ट्रेंड ऑफ द इंडेक्स इज गोइंग टू बी। सो ऐसे टाइम पर द बेस्ट वे टू ट्रेड या बेस्ट वे टू लुक एट द चार्ट्स इज लुक एट इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड बी वेरी प्रोएक्टिव व्हेन दोस लेवल्स आर ब्रीच्ड और व्हेन दोस लेवल्स आर टेस्टेड। So that was for Nifty. I'll quickly move on to Bank Nifty. Okay, before that, I would quickly show you what the 12 NSE sectors that we track are doing. So अभी अगर आप देखोगे तो 9 जो है वो गेन कर रहे हैं, 9 sectors are trading in the green and उसके सामने 3 declines हैं. So leaders में अगर आप देखोगे, so we have something like PSU Bank, Realty, Metals, which are actually kind of helping the which have helped the index open on a positive note, या अभी जहाँ पर भी है वहाँ पर रहने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बट प्रेशर अगर आप देखोगे कहाँ से आ रहा है, दैट इज मेजरली फ्रॉम FMCG एंड IT stocks. Now rupee, because IT is very closely related to rupee, and there has been slight appreciation yesterday. Slight नहीं बोलूँगा, it is quite a bit of appreciation, but then immediate result probably IT में हमें दिख रहा है. So FMCG today is down by about 0.9%. IT अगर आप देखोगे तो तकरीबन 0.5% से it is being tracked. Then coming on to the Nifty 50 stocks, breadth दो इंडेक्स में थोड़ा हायर लेवल से एक थोड़ा सेल ऑफ दिख रहा है, बट द ब्रेथ स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन पॉजिटिव. So of the 50 stocks, 32 stocks are still in advanced mode, and मतलब they are gaining. जब मैं advance बोल रहा हूँ मतलब they are gaining at this point of time. And top losers at the moment अगर आप देखोगे तो you have something like Tata Consumer, you have something like HCL Tech that are actually pulling the index lower. As a matter of fact, अगर आप देखोगे there are two stocks from the IT pack and it should not come as a surprise. So HCL Tech, Wipro, both of them are under a decent amount of pressure is what I would say. Not 2% but approximately 1.9% का डाउन मूव है. टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सेल ऑफ आया है आज, सो 2.7% ऑन द डाउन साइड इज वेयर इट इज ट्रेडिंग एट द मोमेंट. द अदर वे अगर मैं गेनर्स देखूं तो समथिंग लाइक HDFC Life हैज मेड 8.9% गेन टुडे, एंड SBI Life अगर आप देखोगे तो तकरीबन 3.5% पॉजिटिव में है. Then there are a few other lenders, so something like Shriram Finance, IndusInd Bank, ये भी आज थोड़े पॉजिटिव में चल रहे हैं. Coming on to Bank Nifty, we'll quickly look at what the Bank Nifty is doing at this point. And okay, यहाँ तक किसी को कुछ query है, please put it in the chat box. Okay, in the meanwhile, we'll continue with explaining what the Bank Nifty is doing at this point. So Nifty and Bank Nifty का अगर आप ये पॉइंट पर comparative chart देखोगे just based on price action, Bank Nifty seems to be a that bit more stronger, and
दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ शोइंग बिकॉज अगर आपने अभी देखा होगा कि निफ्टी 50 के जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने पुल अप की तो लेंडर्स जो थे दे वर अ बिट ऑन अ गेनिंग स्प्री okay and but it was the index was basically tracked by FMCG and IT bank but lenders थोड़े positive momentum में थे and that is what is being shown in the bank nifty also बैंक निफ्टी का अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है वी एक्सपेक्ट इमीडिएट हर्डल्स टू बी समवेयर अराउंड 49,800 टू 50,000 50,000 being a round figure so 49,800 to 50,000 is where we might see the immediate resistance come in and अगर उस the immediate support for the index could be somewhere around 48 680 अभी ये लेवल आपको लगेगा कि थोड़ा farfetched है but then one thing you have to remember is whenever there is a momentum build up यहाँ पर हम लोग को थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है कंपैरेटिवली व्हेन यू कंपेयर इट टू से निफ्टी द मोमेंटम सीम्स टू बी दैट बिट बेटर सो द इमीडिएट सपोर्ट हैज मतलब एज कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे है या सपोर्ट जो है थोड़ा बड़ा है सो 48,800 48,700 इज द इमीडिएट जोन दैट यू कैन लुक आउट कमिंग ऑन टू द बैंक निफ्टी स्टॉक्स we'll again go on to the NSE website and go to view all indices and click on bank nifty bank या सो अगर आप बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो 12 के 12 जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं देयर आर जीरो डिक्लाइंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड गेन्स आर एक्चुअली यू नो लेड बाय अपमूव इन बैंक बड़ौदा एयू बैंक कैनरा बैंक इंडसइंड बैंक एंड जो दो इट इज इन द ग्रीन मतलब जनरल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर ट्रेडिंग इन द ग्रीन बट समथिंग लाइक HDFC बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अप ओनली 0.5% so if you compare it to the other stocks that are trading in the green so say compared to a bank Baroda or a EU bank HDFC बैंक जो है ये पॉइंट पर थोड़ा बैकफुट पर so that would be it we'll open up the floor for Q&A and we'll take it from there. So if you have any queries, anything, then you can directly put in the chat box. So basically, there's a query that आज bank, sorry, Nifty 50 आज put side जाएगा क्या? See, we cannot recommend here. I'll just share my screen that I can show you that how you can plot the data or see the various things. Just give me a minute. So this is the Insta option. I'm sure like many of you will be using our Insta options terminal which is available with Access Direct. Now talking about the Nifty futures right now it is at 23,370. Now अभी यहाँ पे 5 minutes का indicators 5 minutes का मैंने charts ले रखा हुआ है. Now you can go into the dashboard जहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है ये पूरा एक ही सिंगल विंडो में लाइक यू विल बी एबल टू सी साइमल्टेनियसली गोइंग विद द शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग आल्सो एंड कौन कौन से स्टॉक्स आज मतलब कितना गेन चल रहा है प्लस कौन से डिक्लाइन मोड पे है दैट यू कैन मींस एबल टू गेट इट फ्रॉम द सिंगल पेज इटसेल्फ नाउ talking about the Nifty 50 right now it is at this like the future is trading around this 23,371. Now in the bank Nifty these are the top banks like which is contributing to the bank Nifty with followed by the LTP and the index range उसका क्या है कितना weightage है सेम गोज विद द निफ्टी 50 के निफ्टी 50 में लाइक क्या अभी प्राइस चल रहा है एंड लाइक कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं now in this you can go into the option data just to check the this like option chain now option chain you have to look as the seller point of view क्योंकि option chain जो है उसको डेटा जो देखते हैं वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि दैट हाँ सबसे ज्यादा कहाँ पे लाइक OI बिल्डअप हो रहा है and what is the major change in the OI data. Now if I look out the 2.64 crores का OI data है that is on 23,350
followed by 2.23 CR है, that is on the 23,400, and 1.64 CR on the call side. कि यहाँ से सेलर जो है मार्केट पे प्रेडिक्ट करेंगे दैट ओके मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. Simultaneously, like coming on the put side also, that is 23,250 followed by the 23,200. That's a major OI data you can see right now in your screen. That जहाँ पे मेरा कर्सर है कि that 23,200 पे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हैं कि that they are saying that market इसके नीचे नहीं जाएगा, means the put buyer. So Karan, if you can just explain that quickly about the एक call seller and put seller का क्या view रहता है market पे. या सो आपको इतना समझना है कि जैसे अभी रोहित ने जब भी बोला कि वी व्हेनेवर वी सी ओआई डेटा, करेक्ट, सो हम लोग को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सो द लॉजिक इज दैट ऑप्शंस आर बेसिकली अ हेजिंग टूल. सो अगर आप ऑप्शन कर रहे हो या ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बेसिक अजम्पशन इज दैट यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन एंड यू आर हेजिंग योर पोजीशन. एंड अगर आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट जो भी खड़ा है तो यू नॉर्मली टेंड टू सेल ऑप्शंस बिकॉज यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द टीठा डी के. So ऐसे टाइम पर when you're looking, that is why when you're looking at the OI data, you basically assume that जो भी open interest है that is basically on the short side. So एक आपको ध्यान में रखना है कि ये query आपके mind में भी आएगी कि if someone is selling then someone is buying, certainly. But then what you have to understand is you have to look at what the smart money is doing. नाउ आई कैनॉट 100% टेल यू कि ये अगर समझिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन में एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में देर इज टोटल बिल्डअप ऑफ अबाउट से 2 लाख और 25 लाख. सो आई कैनॉट कम्प्लीटली टेल यू कि ये सारे जो है वो बेच कर बैठे हैं. But then the basic assumption is that because you are trading into option, that's a hedging tool, so you assume that it is basically selling. Now again we have reiterated this in all our webinars कि जब भी आप ऑप्शन बेचते हो आपका जो लॉस है that is unlimited, and जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो लॉस unlimited either in case of put or call, and अगर आप ऑप्शन परचेज करते हो तो आपका प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. बिकॉज एक आपको याद रखना है कि whenever you sell an option you receive the premium and your profits will be limited to the amount of premium that you have received. So and in case of a long position in option, then you have to remember that you have paid the premium, so your loss is going to be limited to the premium that you have paid. Correct. So thank you so much, Karan, for giving such a great insight. Now, talking about this option chain data, now let's see like अभी क्या data like आ रहा है market से and how it is moving the market actually. So let's if you have any queries, anything, then meantime you can put in the chat box also. There was query that how you can see this terminal, so you can go into this simple hai accessdirect.in. Now first of all I'll just want to show you the couple of few more things, that is यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स रहता है. यू कैन क्लिक ऑन दिस ट्रेडिंग रिपोर्ट. सो जो अभी मैंने निफ्टी 50 का रिपोर्ट एक्सप्लेन किया है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. Now this Nifty 50 this strategy report what we discussed right now. Simultaneously you can go into the learn section also, and learn section में you can see on all our upcoming webinars. Now एक बार पहले मार्केट देख लेते कि मार्केट क्या चल रहा है वैसे. Now this in this insta option you can also get this familiar with the strategy tools, that is you can build your own strategy कि whether you want to go into the this like call seller or the put seller, or you want to build the strategy of the long straddles or the strangles or the butterfly strategy, and directly you can execute the trades from here also. Now if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. Will be available for another minute or so, and अगर उतने में कुछ query नहीं है, clarity है, then we'll call it a day. And then we'll certainly see you tomorrow जब भी हम लोग हमारे जितने भी concept of the days रिलीज हुए हैं, so जब भी हम लोग वो explain करेंगे, so stay tuned for that also. Yeah, so tomorrow's session is at 2:30 p.m. on the technical analysis. So we have already covered, that is means we have shared this like the details through push notifications, that is through mobile app notification on the RSI MACD statistics एंड बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है. तो ये जो सारा है, ये सारा कल हम लोग वेबिनार पे लेंगे एट 2:30 p.m. सो ऑलरेडी दिस इवेंट इज लिस्टेड इन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो. You can click on this, hit like and subscribe, and click on the bell icon so that you get notified for this session actually. Also today evening there is a fireside chat which will be hosted by our head of research, Mr. Akshay Chinchalkar. Do look at that. So
if you want to get insights into how certain policies and ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगी, अगर आपको ये जानना है देन प्लीज़ लॉग इन टू द वेबिनार, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वो लाइव होगा. सो प्लीज़ डू टेक अ लुक एट इट. इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव. पिछली बार भी हम लोगों ने विजय बंबानी जी के साथ किया था एंड इट वॉज प्रिटी इन्फॉर्मेटिव. So ऐसा नहीं है कि because they are talking geopolitics या they are talking about the US bond deals, retailers cannot make anything out of it, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So जो चीज़ें जो ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, that I think every trader should be aware of what is happening around them. So it is just an information pass on thing. It is just a discussion between two people who just want to understand what is happening, and with all the new with the new US administration coming in, क्या हो सकता है, what could be the policies, how it could affect our markets and all those things. So with this, we'd like to end our webinar, and we'd like to thanks to all participants for attending the today's session. And we'd like to thanks to Karan also for giving such a great insight about the Nifty 50 followed by the sectors that you can look out for. And intraday level पे जाते आते Karan एक just एक आप बता Sure, पाएंगे कि that sure, what should sure, be the sure. support and resistance? Yeah. सो जब भी हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं, सो विल स्टार्ट ऑफ विद बैंक निफ्टी. मैं 75 मिनट चार्ट प्रीफर करता हूँ. व्हाई? बिकॉज इफ यू डिवाइड द टोटल ट्रेडिंग आवर्स बाय 75, आपको प्रॉपर नंबर ऑफ कैंडल्स आते हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ बैलेंस बिटवीन नॉइज एंड ट्रेंड. अगर आपके पास 75 मिनट चार्ट नहीं है देन यू कैन सर्टनली यूज 1 मिनट. सो बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला कि इट इज अ बिट स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर टू निफ्टी. सो यहाँ पर भी हमें यही दिख रहा है कि तकरीबन 49,900 और प्रॉब्ली राउंडेड ऑफ टू से 50,000, वहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देगा. एंड अगेन फ्रॉम एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ बिट टू लार्ज. बट देन वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये पिछले 3 दिनों का अगर आप मूव देखोगे, देयर हैज बीन क्वाइट एन अप मूव. सो 47 से लेकर 49,000 तक इंडेक्स चल गया है. So approximately 2000 points and some change is what the bank nifty has basically moved. So कहीं ना कहीं there is some sort of momentum build up. नीचे के साइड में अगर आप देखोगे, एक जो आज सुबह का गैप बना था, वहां पर आपको हो सकता है कि एक सपोर्ट आ जाए. So the zone could be somewhere in between 49,000 to 48,800, and अगर उसके भी नीचे जा रहा है then probably 48,500 के आसपास जो है सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा. As of now, as of 12:30, we don't have any major triggers that could actually lead to such volatility. अगर आप देखोगे आज सुबह से मार्केट थोड़ा ठंडा ही है. मतलब ठंडा जब मैं बोलूँ, दो देयर इज वोलेटिलिटी, बट एक 100 पॉइंट्स का मोमेंट है निफ्टी 50 में खासकर. yeah. So that is something to watch out for. Then we'll also quickly look at Nifty. So निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, the immediate support would be 23,200, but now that we are very close to it, 23,200 से लेकर 23,160 is where we might see the broad support zone coming in. Resistance में, if you look at simply something like horizontal resistance level, तो आज के दिन का जो हाई था around that, वो थोड़ा crucial level है. That also falls between 23,400, 23,500. So that will be some level that you have to watch out for. Again, now that European markets are just opening, we don't have any major triggers or any major catalysts that could actually lead to a surge in volatility. So based on that, मैं अभी आपको ये levels दे रहा हूँ. And अगर कुछ हुआ भी, if there is major movements in the market, then our research team will certainly come out with a recommendation, and you can follow those. Yes. So as Karan rightly mentioned, that is means you can visit to this like simpleaccessgeneric.in, and under the research section you can get the trading calls which is published by our research team. So you can follow that calls. Right now जो अभी level दिया है, that is as per the data right now, and this webinar is purely on the educational purpose. So we are not recommending any kind of like the buy or buying the call, or doing the this put also. Yeah. So with this, we'd like to end the day here, and we'll see you tomorrow at 2:30 p.m. Tomorrow and today evening also. Yeah, today evening. Please do join. Yes. It's going to be a very informative, very interesting session for everyone. So thank you so